And the helicopters that you will witness shortly is the hard work of our air warriors on ground, who are responsible for maintaining Shri Krishna Dwara Arjun ko of Hellfire missiles and Hydra rockets is a formidable force in the battlefield. These aircraft are equipped with state-of-the-art avionics and sensors, allowing them to operate in a variety of environment and weather conditions. Flying today are the Apaches from 137 Helicopter Squadron of the Indian Air Force, also known as the Vulcans. Formation leader today is Group Captain Praveen Sathi. In fearless arcs, it claims the sky as a symbol of strength as it roars by. Ladies and gentlemen, keep your eyes towards the sky. Approaching the saluting days now, the Ajay formation precision of our Indian Air Force pilots. Ladies and gentlemen, brace yourself to witness now the Satluj formation, named after the AN-32 transport aircraft regarded as workhorse of the Indian Air Force. Formation leader today is Wing Commander Pinak Ashok Korgale, flying the AN-32 of 48 Squadron. It is flanked by the two Dornier aircraft of 41 Squadron, led by Wing Commander Amol Ashok Rao Dixit. Satluj, as the name suggests, is the formation symbolizing strength, resilience and the vital role of these aircraft. Ladies and gentlemen, shift your gaze towards the saluting days. Now we have the Satluj formation. ध्वज के नेतृत्व में वयम रक्षामा के अनुरूप 154 समुद्री जहाजों और 78 विमानों के बेड़े के साथ भारतीय तटरक्षक समवर्ती ऑपरेशन के संचालन से समुद्र में और समुद्र से आने वाले खतरों का मुकाबला करने में सक्षम है। 1978 से स्थापित भारतीय तटरक्षक ने अब तक लगभग 12,000 जानों को बचाया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सलामी मंच के ऊपर से गुजरता हुआ रक्षक फॉर्मेशन। Ladies and gentlemen, please brace yourself now to witness the Arjun formation, the Whale Vipers. The motto of this squad is Praharati Pratihanti, or Strike to Kill. Along with it, we see two C-295, the latest tactical transport aircraft of the Indian Air Force from 11 Squadron, led by Wing Commander Saurabh Singh, flying in wing formation. These aircrafts, a true marvel of the modern aviation, symbolizing the spirit of innovation. Ladies and gentlemen, on saluting day is now the Arjun formation. मिशन अकम्प्लिश्ड और साथ हैं 31 स्क्वाड्रन लायंस के सुखोई छत्रुम छिद्रे प्रहरेत के आदर्श वाक्य के साथ आकाश में दहाड़ते हुए कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन मनोज यादव ने। लेडीज एंड जेंटलमैन, द वरुणा फॉर्मेशन। और नभ को गुंजायमान करते 24 स्क्वाड्रन के सुखोई आए, उनका धन्यवाद नाविजित निवर्तनम। लेडीज एंड जेंटलमैन, द भीम फॉर्मेशन। 24 स्क्वाड्रन के सुखोई 30 की कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन रूप कुमार वायुसेना मंडल ने। देवियों सज्जनों, आप देख सकते हैं इस विशालकाय कृषिका का आकार बनाते हुए जो भगवान शिव का एक शक्तिशाली अस्त्र है। Ship that keeps our skies sovereign and secure. The Jaguars flying today are from number 5 Squadron, popularly known as the Tuskers. Formation with the saluting guys.